regarding the actions done on the day of Ashuraa, so we find one thing. The hadith of Abu Hurairah radiyallahu anhu mentioned by Imam Bayhaqi rahimahullah in his Shu'abul Iman that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "Man wassa'a ala ayalihi yawma Ashura, wassa'a Allahu alayhi fi sa'ira sanatih," or kama qala alayhi salatu wassalam. More or less meaning in English, the person who expands the expenditure or inflates the spending on his immediate family on the 10th of Muharram, on the day of Ashura, Allah will give barakah in his expenditure, in his income for the entire year. What does it mean? Normally we have a specific amount that we spend on daily groceries or daily food or stuff like this. So if somebody gives extra to his family on the day of Ashura with the intention of acting upon this hadith, Allah subhanahu wa ta'ala will give barakah for his entire income, for his entire salary for the whole year. Now how do we act upon it? What is the meaning of inflating and expanding? Couple of things the muhaddiseen mention. One is, for example, one dish is cooked usually in the house. That day we let our spouses know, make 2 dishes or maybe make some sweets. So in other words, you're giving more allowance for that day of Ashura. Or you give pocket money to your spouses, maybe increase it or give extra on that day. This is the way of acting upon it. This doesn't mean the relatives. Ayalihi means the immediate family. And we should keep one thing in mind, our standards are all different. It's dependent upon the person's capacity. He should not spend too much that it becomes israf or exaggeration. And quickly in a minute, we mention this detail every year when we mention this hadith for those people who have the understanding of the sciences of hadith. You might hear that this hadith is a weak narration or a za'if hadith. So in the books of hadith, the ulama say we find 4 narrations from 4 different Sahaba radiyallahu anhum. The first one is an authentic narration, the remaining 3 are weak narrations. Imam Bayhaqi rahimahullah in Shu'abul Iman brings all the 3 narrations from Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id Khudri radiyallahu an, and after that he comments that when you gather all the chain of narration, they become strong and sufficient. And the latter day scholars have agreed with the opinion of Imam Bayhaqi rahimahullah. So in other words, this is something we can act upon. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, Imam Bukhari labels him as Amirul Mu'mineen fil Hadith, the commander of the faithful in Hadith. He says that I have acted upon this Hadith for 40 to 50 years and I have found the benefit of this Hadith. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow all of us to act upon it. Ameen. इमाम बैहक़ी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम कि जो शख्स अपने घर वालों का ख़र्चा बढ़ा देता है या अपने घर वालों पर ज़्यादा ख़र्च करता है बनिस्बत आम दिनों के, आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के ख़र्चे में बरकत अता फ़रमाते हैं। क्या मतलब है? आम तौर पे घर पे 1 डिश रोज़ाना बनती है, उस दिन आदमी घर वालों को कह दे कि भाई 10 मुहर्रम का दिन है, 1 के बजाय 2 डिशें हो जाएं, थोड़ा सा घर के ख़र्चे पे ज़्यादा ख़र्च कर ले, ये कहने का मतलब है। ये रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ नहीं है, ये अपने बीवी बच्चों से मुताल्लिक़ है। या आदमी बीवी को जो है घर ख़र्चा देता है उस दिन इस नीयत से कि हदीस पे अमल हो जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख़र्चा दे दे, ये मिसालें हैं इस पे अमल करने की। इससे इसराफ़ मुराद नहीं है कि इतना दे के इसराफ़ की सूरत बन जाए। और हर आदमी की हैसियत अलग है, तो हर आदमी अपनी हैसियत के एतबार से ख़र्च करेगा। आखिरी चीज़, हम ये सोच उलमा से ये बात सुने तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई ये ज़ईफ़ हदीस है, इसको बयान नहीं करना चाहिए। तो कुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से हमें ये हदीस मिलती है। पहली रिवायत जो है वो मज़बूत सही रिवायत है, बाकी 3 रिवायतें कमज़ोर हैं। इन तीनों रिवायतों को एक साथ ज़िक्र करके इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब सारी रिवायतों को जमा कर दिया जाए तो उसमें ताकत आ जाती है और वो काबिल अमल बन जाती है। तो ये इमाम बैहक़ी का कौल बाद के उलमा ने भी कबूल किया है। सुफ़ियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में उनको अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस कहा है। वो फरमाते हैं कि 40 से 50 साल मैंने इस हदीस पर अमल किया
اور میں نے اس کا فائدہ اپنی زندگی کے اندر دیکھا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.